Welcome to my YouTube channel Study Point 11. Today I'm going to talk about present tense and its subordinate types. But before starts teach before it starts to discuss these this topic present tense and its types, I would like to recall what I studied in previous class. We were discussing about the tense and its kinds. In the tense, we came to know that it is derived from the Latin word tempus, which means time, or according to some grammarian, they said that it is derived from an old French word, tense, which means time. So in one way or another way, we came to know that tense means time. हमें पता चला कि tense का मतलब है time. It can be considered as a huge period of time, or we can say a bulk period of a time. फिर हमने देखी कि इसके kinds क्या है, past tense है, present tense है, future tense. I gave you examples how we can consider that tense has three kinds. फिर मैंने example इस पे भी दे दी है कि tense के कितने तीन किस्में हैं. फिर उनके एग्जाम्पल्स पास्ट टेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाइक ही वेंट टू स्कूल, ही प्लेड अ गेम, ही sang a song, she sang a song, he recited a holy verse of holy Quran. It means these actions stated that had happened in the past. फिर उसके बाद मैंने प्रेजेंट टेंस की बात की, an action which is done. जैसे मैंने बोला he writes a letter, he plays a game, she sings a song. ऐसे बहुत सारे जिसमें हमें प्रेजेंट की बात हो रही थी. एक्शन का टेंस स्टेट ऑफ एक्शन या फंक्शन ऑफ टाइम फंक्शन की दिखा रहा था. फाइन. फिर मैंने फ्यूचर की बात बोली थी. फ्यूचर विच इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन और आइडियाज. वो सारा यू कैन चेक इट इनटू द प्रीवियस वीडियो इफ यू वांट नो मोर अबाउट द टेंसेस. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट प्रेजेंट टेंस एंड इट्स सबऑर्डिनेट टाइप्स. आज प्रेजेंट टेंस की बात होती है. प्रेजेंट टेंस होता क्या है? वो जो हाल में है, उर्दू में इसको हम कहते हैं हाल, यानी कि जो वक्त चलता है. अब इसके भी फर्दर सबऑर्डिनेट टाइप्स है. पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट. इसके और भी मल्टीपल नेम्स या अल्टरनेटिव नेम्स हम इसको कह सकते हैं. ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले हम इसको ग्रामरियन या ग्रामर में लिखते हैं. फिर हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट इसको कह सकते हैं. ठीक. तो प्रेजेंट टेंस होता क्या? पहले एन एक्शन विच इज डन, ही प्लेज अ गेम, ओके, या ही राइट्स अ लेटर. तो दीज एक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन द प्रेजेंट टेंस. बट फर्दर हम पहला डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट. इसमें बहुत सारे बिफोर टेलिंग यू अबाउट इट्स फंक्शन और द यूज कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इट इज़ बेटर दैट आई शुड अगेन रिवाइज हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट सिंपल और इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट. देयर आर थ्री एटलीस्ट थिंग्स दैट शुड एवरीवन शुड नो. कम से कम हर एक को पता होनी चाहिए कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. पहली बात, हमें वी नीड सब्जेक्ट हमें चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए. लाइक सपोज आई से शी इज द सब्जेक्ट, शी प्लेज वो खेलती. क्या खेलती? वो खेलती है. शी प्ले वो एक गेम खेलती है, वो एक खेल खेलती है. वो शी प्लेज अ गेम. वो लेटर लिखती है, वो चिट्ठी लिखती है. शी राइट्स अ लेटर. ठीक है. तो बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. मैंने सब्जेक्ट की बात की, मैंने वर्ब की बात की, मैंने ऑब्जेक्ट बात की है. ठीक है. और इसमें मैंने तभी बोला था प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट यू कैन सी हियर मैंने लिखे कि दो ऑक्सिलरी वर्ब्स है. हेल्पिंग वर्ब इन्हें बोले, ऑक्सिलरी वर्ब इन्हें बोले, स्पेशल वर्ब्स बोले, या आप असिस्टेंट वर्ब्स को कह सकते हैं. इनका क्या काम होता है? इनका काम पहला ये होता है टू हेल्प द मेन वर्ब. ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं. दूसरा ये व्हेन वी यूज, जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है? तब इनसे सेंटेंसेस पे इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, सक्सेसफुल वाले सेंटेंस बनते हैं. फिर मैंने बोला डज और डू जो है दीज आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. फाइन. तो डज कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. मीन सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, देन वी कैन यूज डज. एंड डू कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा. फाइन. यू कैन सी दैट सब्जेक्ट इज यूज्ड विद डज इज यूज्ड विद सब्जेक्ट सिंगुलर एंड डू इज यूज्ड विद सब्जेक्ट प्लूरल. फाइन. ओके. और मैंने ये भी बोला था आई कांट बी यूज्ड विद डज बिकॉज आई इज एन एक्सेप्शनल केस. मैंने ये बोला था आई जो है, आई ये एक्सेप्शनल केस है. क्या है? एक्सेप्शनल केस. तो इससे क्या होता है? इट ब्रेक्स डाउन द रूल्स एंड लॉज ऑफ इंग्लिश ग्रामर. दैट्स व्हाई आई डज नॉट यूज विद डज. आई इज यूज्ड विद डू व्हेन वी मेक अ सेंटेंस. लाइक मैं क्या नहीं बना सकता आई डज प्ले अ गेम. मैं मुझे बोलना आई डू प्ले अ गेम, आई डू राइट अ लेटर, आई डू सिंग अ सॉन्ग, आई डू टीच अ लेसन, आई डू राइड अ बाइक.
सो ऐसे में एग्जाम्पल बहुत सारे बना सकता हूँ डू आई को इस्तेमाल करके, फाइन आई को सब्जेक्ट लेकर, तो इसके साथ में डज नहीं इस्तेमाल कर सकता। अच्छा, ही शी इट, इन ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स इनके साथ में, या कोई पर्सन नाम बॉय गर्ल इनके साथ ही, क्योंकि ये सिंगल है, सिंगुलर डिनोट सिंगल जिसमें वाहिद हो, तो इनसे में सब्जेक्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है तो इनके साथ में डज इस्तेमाल कर सकता है। फिर इसके बाद वर्ब, शी डज सिंग ए सॉन्ग, तो मैंने सब्जेक्ट लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ली, फिर उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट लिया। फाइन। अच्छा, ये वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर दैट हाउ टू मेक द सेंटेंस इन द प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट आज जिस पे हम बात करें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन बाय वन, विल डिस्कस देम। पहला action, in the what is it, we call them uses, how we call them functions, because it helps us in our day to day life। ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमें हेल्प करती हैं डे टू डे लाइफ में। पहला वाला क्या है, यूज इसका, एक्शन प्रेजेंट मोमेंट। व्हाट डज इट मीन? आई विल मेक इट ए कंप्लीट सेंटेंस सो दैट इट शुड बी अंडरस्टूड टू यू, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। In which we use such actions which happens in the at the present moment, or which goes in the present moment, an action which is continue at the present time। For example, मैं example, वो हरकत, वो बात, वो काम जो जारी होता है present moment में, an action which is continue at the present moment, that action is represented, that action can be spoken in the present indefinite। वो बात जो जारी होती है, जो कंटिन्यू होती है, उसको भी हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, यू मे से हाउ, एग्जाम्पल, शी रीड्स अ बुक, शी plays a song, are you getting? She writes a letter, he speaks English। तो ये currently, he teaches us a story। these statements, ये जो statements है, ये हमें दिखाते हैं something is going on, an action which is still moving, action जो ये run अभी भी कर रही है। so तो ये पहला यूज। सेकंड, एक्शन शोज हैबिट, हैबिट इज वो स्टेटमेंट्स, वो बातें, वो काम जो हमें क्या दिखाते हैं, हैबिट्स ऑफ पीपल, हैबिट्स ऑफ पर्सन्स, जो हमें हैबिट्स दिखाते हैं। सपोज या मैं बोलूँगा he rises early in the morning regularly, so when I added a word at the end, regularly, it indicates it is a daily routine of someone, so it tells us about his activities, this is the activity which is done by him daily, on the daily basis। so कोई काम जो रोज कोई करता है, that can be considered in the habit as fine। okay, he baths every day, I use everyday word here, it indicates that it is his habitual action, it is his daily routine, because he is continuously repeating these things, क्योंकि ये बार बार इन चीज़ों को करता है। जो कोई जिसको हम बोलते हैं ये this is the habit of him, ये इसकी आदत है, ये he offers pray regularly, वो नमाज पढ़ता है, वो रोज नमाज पढ़ता है, it indicates that it is his habit। he takes tea regularly, he takes tea early in the morning regularly, वो सुबह सवेरे रोज चाय पीता है, it indicated that this is the habit of a person to take a tea on every day। fine। so then this is, hope you understand। पहला वाला क्या है, an action which is running, which is moving, which is continuous at the present moment, that action can be represented in the present indefinite or in the present simple। fine। वो action जो जारी होती है उस वक्त जब present moment चलता होगा, जैसे she reads a book। if anybody asks you a question, suppose your sister is in front of, or your daughter is in front of you, आपकी बेटी आपके सामने है, तो आपको वहाँ से कोई what she is doing, okay, you can call, आप उस वक्त कह सकते हो, you can answer, you can reply, आप क्या कह सकते, she reads a book, वो किताब पढ़ते हैं, she recites the holy verse of holy Quran। fine। she plays a game। okay, ये वो चीज़ें हैं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं, ये वो जुमले हैं जिनसे आप बताना चाहते हैं कि एन एक्शन विच इज़ कंटिन्यू एट द प्रेजेंट मोमेंट, जो कंटिन्यू होती हैं प्रेजेंट मोमेंट में। दूसरा वाला, हमने दूसरी की बात की, एन एक्शन विच शोज हैबिट्स। फाइन। जो आदत हमें दिखाते हैं, तो हम उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, प्रेजेंट सिंपल। ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ भी होता है, लाइक I say the sun rises in the east, I say honesty is the best policy, or we can call it a fact, union is strength। these are the statements which can be represented in the present simple as well। fine। then there is a saying or a quotation, this is the saying or a quotation which can be spoken by which can be written or spoken by an author, but whether it may be dead or alive, चाहे ये author, ये जिसकी ये quotation होगी, जिसकी ये saying होगी, old saying जिसकी भी, चाहे वो जिंदा है या author जिसकी ये होती है, ठीक है, the author can be considered a very special person, वो special personality मानी जाती है इसकी ये saying या quotation। या even if you find out the title of the newspaper, title of the news, whenever you find
सपोज आई विल गिव एन एग्जांपल. आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, यू रीड द न्यूज़ दैट हैड हैपेंड बिफोर अ डे. जो एक दिन से पहले अगर मैंने आज की न्यूज़ पढ़नी होगी, तो असल में ये आज की नहीं होती है, कल की होती है. बट इसकी हेडिंग, इसका टाइटल जो होता है, ये डिपिक्ट ऐसे करके दैट हैड हैपेंड जस्ट, जो जैसे अभी ये हुई है, इट इंडिकेट्स प्रेजेंट मोमेंट. तो यहाँ का ये कोटेशन जो होती है या सेइंग जो होती है, ओल्ड सेइंग, ये भी हमें कहनी होती है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल में. फिर उसके बाद फ्यूचर प्लानड इवेंट विच इज ऑलरेडी, एंड suppose we say future planned event which has already planned, which is already prepared. एक ऐसा फ्यूचर, हालांकि हमें ये कहना चाहिए फ्यूचर में, बट फ्यूचर प्लानड इवेंट है, मगर इट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, इट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. सपोज आई से आई गो टू कलकत्ता next week. Okay, his marriage comes up next week. So these are the statements which indicates an action which happens in the an arranged future, which is already prepared. An event that happened in the future, but it is already prepared. जो वो event जो future में है, मगर इसको already prepare करके है. अब ये statement जो है, an action that can happen in the future, वो जो कब होगी, फ्यूचर में होगी. मगर आपने क्या कब बताना है, आप बता, मगर आप ऐसे बता दो कि आपने ये ऑलरेडी प्रिपेयर, ऑलरेडी अरेंज करके रखा है. जैसे आप बोलते हो आई गो टू दिल्ली next week, next morning. So it is an event that goes to happen in the future, but you have already decided and you have already arranged it by saying in such a way. अब उस तरीके से कहते हैं, that can be considered in the present indefinite. ये यूज भी इसका है. तो मकसद क्या है, पहले थोड़ा सा इसको ब्रीफिंग देते हैं आपके जहन में. आप ये जो बातें करते हैं ना, यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड व्हाइल यू स्पीक, सो दैट इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस व्हाइल यू स्पीक इन इंग्लिश. यू आर नॉट इनकरेक्ट, आप गलत नहीं होते हैं, बट यू आर अनअवेयर अबाउट द फैक्ट. आपको पता ही नहीं होता है कि आप बोलते क्या है. यू आर 100% करेक्ट व्हेन यू यूज सच in such a ways, in such angles. Even if you are viewer, you are the person to whom you are interacting, he may or she may consider you are wrong, but you need to be very much focused about these videos, about the English grammar, that you are at that time correct. Fine. तब उस वक्त आप सही होते हैं. पहली बात हमने की, दूसरा तीसरा चौथा भी खत्म किया, पांचवा भी खत्म किया, फ्यूचर प्लान. नाउ सिक्स्थ वन इज a past event in, okay, a past event in order to make the description. Okay, it's a kind of historic present. Suppose an historical happened, any past, कोई जो पीछे गुजर गया, past event that had happened, but we want to describe it in it should look more real, ताकि ये more real है. कोई ऐसी historical event, एक ऐसी historical statement ऐसा कहेंगे, हालांकि ये गुजर गया होगा, हालांकि ये बात गई हुई होगी, ये event गया हुआ होगा, but we want express in such a way it should look like more real, it should look like that it has just happened, or it is moving on. फाइन. इसमें इम्पैक्ट दिखाते हैं, इसमें इन्फ्लुएंस हम दिखाते हैं, ये प्रेजेंट में है. जैसे हम करें, अलेक्जेंडर ब्रिंग्स आर्मी टू अटैक इन इंडिया, जैसे he orders his soldiers to kill people, he orders his troops to be killed, he orders people to be killed, he orders to be people to be killed, he orders people to be killed. So these are the statements which indicate a past event, but we want to describe it, in it should look like more real. ये real लगना चाहिए. सिंपल टर्म्स में कहूँगा, जो पास्ट इवेंट होता है, हालांकि पास्ट इवेंट मीन्स कि ये वो बात है जो माजी में हुई थी, तो ज़रूरत क्या है फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में. यूज़ कह रहा हूँ, हम हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो होते हैं, इफ़ वी वांट express them, it should look like more real, more generic. अगर हम चाहते हैं कि ये more real लगना चाहते हैं, तो हम वो इवेंट जो होता है, हम उसको कहते हैं उस हिसाब से, ताकि ये लगे, तो ये पास्ट इवेंट होता है मगर ये लगे रियल में लगे, तो हम ऐसे कह सकते हैं. Alexander brings an army to attack in India, he orders people to be killed. तो ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं, ये इंडिकेट क्या करते हैं, पास्ट इवेंट, बट दैट शुड आल्सो हैपन और रिप्रेजेंटेड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट, फाइन, और सिंपल प्रेजेंट. फिर लास्ट वन हियर, लास्ट रनिंग कमेंट्री ऑफ इवेंट्स, एन एक्शन व्हिच एनी इवेंट वी वांट कमेंट. Like इस वक्त, suppose if I'm going for a live record and I'm just speaking continuously, there are you people are free, you persons, you students are free to comment. You can speak anything currently, right now, what's going to happen. इस वक्त क्या हो रहा है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप स्पीक कर सकते हैं. दो स्टेटमेंट्स कैन बी कंसिडर. लाइक मैं कहूँगा, सपोज विराट कोहली कम्स फॉरवर्ड,
इवेंट की बात, स्टोरी चल रही है, एक मैच चल रहा है, विराट कोहली कम्स फॉरवर्ड नाउ एंड हिट्स द बॉल, सो इट्स अ रनिंग कमेंट्री दैट गोज ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट द प्रेजेंट यू जस्ट लिसन इट कमेंट्री फ्रॉम द कमेंटेटर्स, आप सुनते हैं ये कमेंट्री कमेंटेटर से कि कैसे वो रनिंग कमेंट्री, दे यूज सच वर्ड्स दैट इवन इफ इट इज रियल, मैं नहीं कहूँगा, बट कमेंट्री जो होती है, these statements can also be expressed in the present simple, can be expressed in the present indefinite. ये statements जो होते हैं ये present indefinite में होते हैं. Hope you understand everything about these are the very much important about the function and the use of the present indefinite. ये सारा जो था present indefinite या present simple जो हम इसको कहते हैं ये ज़रूरी था. हालांकि अब सबको आता है कि फॉर्मेशन, हाउ टू यूज, हाउ टू मेक अ सेंटेंस, सब्जेक्ट चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, फर्स्ट फॉर्म वर्ब हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए, ये सारा. अच्छा, अब जब इसके बाद मैं दूसरा पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस थोड़ा फिर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. फिर हम वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस. फाइन, ओके, हैव ए पेशेंस. सॉरी. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब इसका दूसरा देखते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट्स आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस. जो होता है, पहले मैं बताऊंगा पहले, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा, फिर सिर्फ यहाँ पर ही मैं आपके लिए वैसे फॉर्मेशन मीन्स हाउ टू मेक ए सेंटेंस. हम सेंटेंस क्या बनाते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. हाउ कैन यू मेक एन सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब. फाइन, एच वी, आपको फर्स्ट फोर्थ फॉर्म आप यहाँ. अच्छा, कंटिन्यूस के बाद मैं बोलूँगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टू यू टू कीप इट इन योर माइंड. आपको ये जहन में रखना होगा. जब ये चीज़ें आपको जहन में होगी तभी आप सेंटेंसेस बनाएंगे. ठीक है, बिगिनर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, जो पहले लर्नर्स हैं, जिनको हु आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस थिंग, दैट दे नीड टू बी फोकस्ड मोर टू नो अबाउट द ग्रामर का रूल्स मोर. उनको और चाहिए कि वो रूल्स जानने की कोशिश करें. तो हम पहले बात करते हैं फॉर्मेशन की. फॉर्मेशन मीन्स हाउ टू फॉर्म ए सेंटेंस, हाउ टू मेक ए सेंटेंस. सेंटेंस कैसे बनाते हैं. आपको सब्जेक्ट चाहिए, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आपको मैन वर्ब चाहिए. यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूअस में, जो भी कंटिन्यूअस होगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है. इट मीन्स हाउ मेनी कंटिन्यूअस कम्स इन द टेंसेस. चाहे इसमें ऑलमोस्ट 6 कंटिन्यूअस टेंसेस आते हैं, उनमें हम करते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल. राइट, आईएनजी मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि ये इस्तेमाल करते हैं. तो वी कॉल इट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. हम इसको फोर्थ आईएनजी जिसमें आता है, वी इन एवरी कंटिन्यूअस वी यूज, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इन सब में हम ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. ये आपको ये हमेशा याद रखना है. फाइन. अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट जिस पे बात खत्म होती है यहाँ. हाँ, अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव मीन्स एन एक्शन विच इज कंटिन्यू, विच इज गोइंग ऑन, जो चलती है, इसीलिए इसका नाम देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. फाइन, यू गॉट अबाउट इट. आपको पता चला होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसको हम कहते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो बात होती है जो कंटिन्यू होती है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँगा इस वक्त, आई एम टीचिंग यू, इजंट इट ट्रू. क्या ये आपको नहीं लगता ये सच है. हाँ, सच है, क्योंकि मैं इस वक्त पढ़ाता हूँ. सो एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन, जो चलती है, जो जारी है, तो हम उसको इंडिकेट करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. जब भी आप काम करते हैं, जिस वक्त आप काम करते हैं उस वक्त आप कंटिन्यू होते हैं, मगर कौन सा कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. फाइन, एन एक्शन विच इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज रिप्रेजेंट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस. होगी डेफिनेशन, आया समझ. ओके, फॉर्मेशन आई समझ. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट. आप हेल्पिंग वर्ब पहले जानते हैं. इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर. वहाँ से जैसे रूल वहाँ पे था सिंगुलर के साथ, यहाँ पे भी जो इज है इट कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट. और जो है ये सब्जेक्ट प्लूरल के साथ आता है. और एम जो है ये हमेशा
आई के साथ इस्तेमाल होता है. फाइन, होप यू अंडरस्टैंड. इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस वी हैव 3 ऑक्सिलरीज. प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है हमें इसमें 3 ऑक्सिलरीज होते हैं, इज, एम और. इज यूज्ड विद सब्जेक्ट सिंगुलर. इज जो होता है ये हमें सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है. आर जो होता है, आर इज यूज्ड विद सब्जेक्ट प्लूरल. फाइन. देन एम इज यूज्ड विद सब्जेक्ट आई, हमेशा आई के साथ होता है. नाउ इट इज वेरी easy to you to make a sentences. जैसे formation, I am writing a letter, positive sentence. I am not writing a letter, negative sentence. Am I writing a letter, interrogative sentence. Am not I writing a letter, क्या मैं चिट्ठी नहीं लिखता हूँ. So these are the statements which indicate an action which is going on. या मैं ऐसे I am writing a letter, I am playing a game, I am teaching you, I'm reading a story, I'm speaking in English. So these are the statements which indicate an action which is going on. Fine. तो मैंने I को इस्तेमाल किया am के साथ, फिर फोर्थ फॉर्म पर फिर ऑब्जेक्ट लाया. अब is करेंगे. He is running a race. He is singing a song. He is playing a game. He is speaking in English. He is doing well. He is making his notes. तो हम ऐसे sentences बनाते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं, मेन वर्ब लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट हम लेते हैं. ये फॉर्मेशन का काम होता है. फाइन. ऐसे हम लेंगे या ही, शी, इट, ऐसे हम इसके साथ इज इस्तेमाल करेंगे. फिर आर जो है इट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड इट इज यूज्ड विद प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट. ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है. फाइन. तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस में, दे आर, बॉयज आर, गर्ल्स आर, वी आर. तो हमने ये जो सेंटेंसेस बनाए हैं, फिर इसके बाद मैं वर्ड्स बोला, वी आर हेल्पिंग यू, वी आर मेकिंग नोट्स, वी आर ट्राइंग टू बेस्ट, वी आर ट्राइंग बेस्ट, we are running a race, we are singing a song, we are writing a letter, we are, so ऐसे we are swimming in a river, we are watching a television, we are watching the movies. तो ये जो statement है, they are, they are, boys are, girls are, तो ये जो subject plural जब लेते हैं उनके साथ फाइन, उनके साथ आर लगता है हेल्पिंग वर्ब. होप कि ये तीनों सबको समझ. इज सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, एम आई के साथ इस्तेमाल होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है. ये बहुत जरूरी है क्योंकि आई हैव ऑफन फाउंड व्हेनेवर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट दे आर कंफ्यूजिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि इज कहाँ पे लगता है और एम कहाँ पे लगता है. और मैं बिगिनर्स की बात करता हूँ. आई डोंट टॉक अबाउट सच पीपल हु आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. दे मे कंसिडर दैट दीज आर बेसिक बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक्स आर द वी कैन से द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर देम. यही बेस होती है जो उनको बिल्ड करते हैं, जो उनको बनाते हैं. फाइन. ओके. My main motive is this, that first of all you should be aware about English grammatical rules, then it should be helpful to you to speak in English. तो आप सीधे जल्द इसके बारे में ये भी जानते हैं. Now I will make write few sentences so that it will be easy to you. Like मैं भी लिखूंगा he is writing, यानी फोर्थ फॉर्म आप लिखिए, he is writing a letter, she is singing a song, it is raining today. तो ये बात जो हो रही है ये कंटिन्यूअस की वो एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट कैन बी कंसिडर्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. हम इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. अब डिफरेंस क्या है, हम ये भी एक्शन, वहाँ पे भी ऐसे एक्शंस हम कहते हैं जो कंटिन्यू होती थी किसमें, प्रेजेंट सिंपल में, और इसमें तो डिफरेंस क्या है. पहली बात, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, किसकी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट. I want that my class should be more real to you. It should be very easy to you. ये आपको easy लगना चाहिए, ये आपको understand होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है. तभी मैं आपके लिए लिख पाता हूँ. फाइन. ओके. प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस. फाइन. या प्रेजेंट प्रोग्रेस. प्रेजेंट इंडेफिनिट जो स्टेटमेंट्स होते हैं दे आर परमानेंट इन नेचर. एक्सप्लेन करेंगे. ये होते हैं टेम्पररी. टेम्पररी आपको पता आया, समझ आया हुआ होगा, परमानेंट पे आपको समझ आया हुआ होगा. कैसे? परमानेंट मीन्स विच कैन बी स्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत महीनों तक, सालों तक रह सकते हैं. सपोज अगर कोई कहता है आई लिव इन बारामूला, I live in Baramulla. It indicates that the person is from Baramulla. He got birth. He got birth there. He currently resides there. If we want to know about the person, he has given us residence. He has given us every detail about it because it is his permanent location. If a person says I am living in Baramulla,
अगर यहाँ पे ऐसा कोई बंदा कहता है कि मैं ये, इट इंडिकेट्स अ पर्सन इज currently right now he is living in Baramulla, but it is not sure that is he really from Baramulla, is he got a birth or is she got a birth from Baramulla or not. ये हमें नहीं पता, एंड इट सीम्स दैट इट द पर्सन हु टेल्स अस, जो हमें बंदा ये चीज़ कहता है कि मैं बारामूला में राइट नाउ करंटली मैं बारामूला में रहता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये फॉर एवर है, ये कुछ लम्हे कर। अच्छा कोई कहता है इस पर वो स्टेटमेंट, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम टीचिंग यू, एन एक्शन जो होते हैं कंटिन्यू, बट इट रिमेन्स it remains continue for some period of time but not longer than not more for more time, ये बहुत ज़्यादा वक्त तक रहना रहेगा नहीं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं टेम्परेरी, which is temporary in nature. Present continuous mean to say an action which is continue, which is progressive, but an action remains continue for some period of time, for some moment, for some limited within the limit, within the minutes, within the seconds, within hours, but after minutes it's going to complete, it has to complete. यहाँ पे that's why present continuous में हम कहते हैं temporary in nature होती है, ठीक है। यहाँ पे जो होती है ये permanent होती है। So जैसे कोई कहेगा I study in school, कोई कहता है I am studying in school, both are correct, but the thing is that one who listens these different statements, he or she has to be aware about it. जो ये चीज़ें सुनता होगा उसको ये समझना होता है कि ये असल में कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है। फाइन, तो हमें पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है ये परमानेंट इन नेचर है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है ये टेम्पररी इन नेचर है। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट विच वी आल्सो कॉल प्रेजेंट सिंपल। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में भी जो मैंने अभी पढ़ा है प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक और यूज है, अगर मैंने बोला एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन, वी स्पीक दैट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम वो एक्शंस हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। एक और चीज़ है, हम वो एक्शन भी कह सकते हैं जो होने वाली होगी इन द नियर फ्यूचर। सपोज एन एक्शन विच इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, दैट कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस। मिसाल मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, अभी आई हैवंट येट रीच्ड स्कूल, अभी मैं नहीं पहुँचा स्कूल। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को मिलने जा रहा हूँ, बट आई डिडंट येट, आई एम नॉट मीटिंग माई फ्रेंड्स, इस वक्त मैं नहीं मिल रहा बल्कि मैं मिलने जा रहा हूँ। इट्स गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, 5 minutes, after 10 minutes, after half an hour. So an action which is going to happen in the near future, वो जो near future में होगी, that action can be also present in the present continuous. होप कि आपको अच्छे से आया होगा। आज का हम लेक्चर जो आपका आज का क्लास जो है हम इसी पे ख़त्म करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक माई क्लास, डू सब्सक्राइब एंड नॉट फॉरगेट टू शेयर द video. Thank you.